Thank you, Ji. First of all, it's a pleasure to have this session. And sorry, just give me 1 second. I'll just try to fix the sound. It's just a bit distorting. SNS को जरा fix the sound. जी, तो बिल्कुल तो my name is Ali Alam Kabir and I'm the director of Flying Group of Industry and ये हामिद साहब हैं जी, our CFO, Chief Financial Officer of Flying Cement. And today we'll give a brief view about Flying Cement, its direction, little bit of history, and where we're headed. I'd like to start off by showing you how Flying Group of Industries came into being. So just a second, sorry, I'm just trying to fix it. Sorry, just allow me 1 second to fix this thing. Sure. Just allow me 1 second to share the screen. Sorry. जी बिल्कुल. G. G. So basically, I was saying, so Flying Cement is part of the Flying Group of Industry, and it is one of the ventures. And so Flying Group of Industries actually came into being with our flagship project of flying coaches, and which was about in the 1970s. And then we expanded and the group diversified into the paper and board industry in Pakistan, and set up the first writing and printing paper mill in Pakistan and the largest printing and paper mill in Pakistan. And later we expanded into our tissues manufacturing business as well by the name of Flying Tissues. And then Flying Cement Company Limited came into being. And so that was just a brief history of Flying Group of Industry, and which has a big goodwill in the market and a brand name established since more than, I would say, 6 decades, and even in different manufacturing sectors in Pakistan. So I'd like to brief you on. Ali, so sorry to cut you off. We're getting requests कि अगर उर्दू में भी थोड़ी बात अगर हम लोग करें, उर्दू इंग्लिश का मिक्स रख लें तो जरा इजी हो जाएगा. We've gotten a few requests कि please उर्दू इंग्लिश का मिक्स रखिएगा, सारा इंग्लिश में ना करिएगा. And for those people asking about questions, please we will go to the questions after we're done with Ali Bhai and Hamid Saab's talk. तो आपके जो questions होंगे वो please chat में आप type कर दें, and once we're done then we will go to the questions. Sorry Ali, please continue. Not a problem. तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा ये Flying Cement का जो एक मिशन और विजन है, तो वो यही है to be a premier quality cement manufacturing unit engaged in nation building and to provide the best services in the industry and to be the premium manufacturer. So that is our vision, to provide sustainable growth, because Pakistan, we believe right now, आजकल पाकिस्तान की जो economy है वो grow कर रही है, और उसमें construction in the coming years will play a vital role in the economy. And so we want to be on board
that rally जो पूरी bullish sentiment एक prevail कर रहा है construction sector में, and so we are big believers in sustainable development and sustainable growth. So that is the vision we share together with Flying Cement and the vision of construction industry in Pakistan. So we move on and give you a brief overview of the company and the plant and its capacity. So basically, the plant is located in Kushab on an area of about 127 acres. तो जो ये plant है हमारा Flying Cement का, ये कुशाब में है और 127 एकड़ की जगह पे ये located है, और हमारी दो lines जो है सीमेंट की, line 1 है किलिन की 4000 tons per day की, और line 2 है 7700 ton per day क्लिंकर की, जो अगले साल जिसका COD expected है. तो जो टोटल कैपेसिटी 11700 टन पर डे को ले जाता है आफ्टर बोथ CODs आर कंप्लीटेड. तो उसके बाद वी गिव यू अ ब्रीफ कि हमारा जो लाइमस्टोन का जो माइनिंग एरिया है दैट इज लोकेटेड ऑन अबाउट 4000 एकर्स जो गवर्नमेंट से एलोकेशन मिली हुई है, एंड इट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ अबाउट 100 years. So that is quite sufficient and life, and it is one of जो एरिया जहाँ पे ये लाइमस्टोन की माइन लोकेटेड है, ये जो कुशाब का एरिया है, इट इज नोन टू बी वेरी रिच इन मिनरल्स, एंड इसकी जो लाइमस्टोन की प्योरिटी है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द होल रीजन, एंड सो वी आर वेरी बिग बेनिफिशियरीज ऑफ दैट. एंड फिर आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट हाउ द सप्लाई चेन डायनामिक्स वर्क. सो फ्लाइंग सीमेंट की जो मार्केटिंग नेटवर्क है, इट इज हैंडल about 36 to 45 dealers located in Punjab and KPK and major cities like Faisalabad, Sialkot, Gujranwala, and then we have our corporate government contractors as well. So this is how the supply chain is managed, and we have a wonderful network which looks after, handles the whole domestic sales in the region. And then we'll give you a little brief about how the energy management works. तो हमारी जो power की requirement है वो क्या है. तो जो पहली लाइन है क्लिंकर की 4000 टन पर डे की, इसकी 17 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है पावर कंजम्पशन की, और जो लाइन 2 है 7700 टन पर डे जब ये ऑनलाइन आएगी तो इसकी नेट रिक्वायरमेंट इज अबाउट 32 megawatts, which takes the total energy requirement to about roughly 49 megawatts. And how we will meet that? So हमारा वापडा के साथ 25 मेगावाट का कनेक्टेड लोड है. फिर उसके बाद हमारा WHR सिस्टम जो अभी ऑनलाइन आया फरवरी में, which was a big achievement, and वो 7.5 megawatts का था. Then we have furnace oil engines with a total capacity of 40 megawatts, and then we have a captive power plant coming online next quarter, which is 12 megawatts. So our total in-house energy generation, including the Wabda connected load, will be 58.5 megawatts, which is more than sufficient to cover our 49 megawatt energy requirement. So that is it with the energy requirement. अब हम आगे बढ़ेंगे. Building, what are the building blocks for our business? So what is the strategy of our company, and what are the building blocks which are quite essential हमारी कंपनी के लिए? एक तो obviously हमारा है profit maximization is one of our goals, but we want to achieve that to a sustainable way, कि हम environment friendly भी हो और हम एक sustainable तरीके corporate governance के top measures ने. तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो team है, it is quite skilled, और हमारे जो chairman साहब भी हैं, कामरान साहब, he is one of the most technical people in the entire industry, and बाकी भी जो हमारी team है, finance की हमारी team है, CFO Hamid साहब is one of the most skilled people in the finance industry, and he has a rich experience of working with Style Textile as their CFO, or various top Pakistan की जो companies हैं उनके साथ he has been involved. So हमारी जो corporate governance के measures हैं, वो we want कि हमारी जो सबसे जो team है, it is very rich and with experience. फिर हमारी ये जो business की growth है, so we want to achieve that through अपना revenue बढ़ाएं, कंपनी का profit maximization की तरफ जाएं, economies of scale achieve करें. So that is one of our targets. इसलिए we keep on improving our internal efficiencies, कि हम economies of scale की तरफ जाएं और maximum उसमें cost efficiencies को derive करें. And फिर उसमें जो business stability की sustainability की बात आ जाती है,
उसमें we want to Flying Cement cares for all of its stakeholders. So whether it's उसमें government involved है, उसमें बाकी institutions involved हैं, हमारे customers involved हैं, जितने भी stakeholders Flying Cement के हैं, हम चाहते हैं कि जब Flying Cement grow करे, उसके साथ ही सारे stakeholders जो हैं, they grow with the company. So that is our vision for Flying Cement. And now we'll move on कि हमारे in what milestones have we achieved during a brief time in Flying Cement. So firstly, firstly, I'd like to say अभी हमने roughly 15 February को notice भेजा था stock exchange को कि हमने 7.5 megawatt की successful installation और operation में आ चुका है जो megawatt है 7.5 megawatt. So this is a very environment friendly green project जिससे हमारी energy cost जो है वो बहुत reduce हो जाएगी और इससे हम भी even it's a step towards sustainability as well. Or so this was quite a milestone which was achieved by the company, and yes, it was completely it was also self-financed, equity financed. And then the second milestone was which we achieved. हमने successfully अभी 2 billion का right subscription को close किया है. So we announced the right shares about in March and for 2 billion rupees at par, and it was successfully subscribed on about 26th May. So that transaction has been successfully closed. And then the third milestone हमारा जो है जो कंपनी ने टर्न अराउंड किया है वो पिछले साल हमने तकरीबन 531 मिलियन का लॉस बुक किया था अपनी बुक्स में बिकॉज कोविड की सिचुएशन थी, प्राइसेस सीमेंट के नीचे आ गई थी. तो हमने इस साल जो है हमने ये प्रॉफिटेबिलिटी हमारी काफी बेहतर है. रफली 205 मिलियन बेस्ट एस्टिमेट्स है हमारे इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी के. तो अगर देखा जाए हमने प्रॉफिटेबिलिटी में 700 मिलियन का डेल्टा कवर किया है. सो विच इज अ बिग माइलस्टोन फॉर द कंपनी. और अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो पिछले साल हमारा रफली 1.2 बिलियन के अराउंड पूरे एनुअल रेवेन्यू था. इस साल वो रेवेन्यू जो है इट्स एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्थ ऑफ 4 बिलियन रुपीज. तो हमने रेवेन्यू में जो है रफली 2.8 बिलियन का रेवेन्यू का डेल्टा भी उसमें कवर किया है. सो दैट इज अ बिग माइलस्टोन फॉर द कंपनी. फिर जहां तक गियरिंग की बात आ जाती है, लेवरेज की बात आ जाती है, तो इट इज फ्लाइंग सीमेंट का सबसे बड़ा एक कंपेटिटिव एडवांटेज जो मैं कहूंगा आज है, जो मार्केट भी अप्रिशिएट कर रही है कि गियरिंग सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री का एवरेज है 47% एंड फ्लाइंग सीमेंट ने गियरिंग अपना मेंटेन करी है 41% पे. तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है फ्लाइंग सीमेंट की कि ऑल्दो इट हैज गॉन इनटू एक्सपेंशन, हमारी नई लाइन भी लग रही है 7,700 टन की, फिर भी हमारा जो लेवरेज है दैट इज इन चेक एंड इन कंट्रोल. सो दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कमिंग ईयर्स regardless of even अगर interest rates में कोई movement आती भी है in the future, so we are hedged against any interest rate movement. So that is a big milestone. और उसके बाद लास्टली हमारी जो ये टैंक फिल्टर टेक्नोलॉजीज हमने इंट्रोड्यूस की हुई है, तो वी आर लिमिटिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द कंपनी एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड जो यूएन का एसडीजी गोल्स है, सो वी वांट टू मूव क्लोजर टू देम एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस. So now we'll move on to our next slide. ये हमने अचीवमेंट के लिए ये WHR जो हमारा 7.5 मेगावाट का ऑनलाइन आया फरवरी में, ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो सारे देख सकें. तो ये सक्सेसफुली कमीशन हुआ 15 फरवरी को एंड so this was some pictures of the WHR system. Now we'll discuss a little bit about the industry, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के, और where we see the cement industry going forward और अभी उसकी क्या हमारी तरफ से परसेप्शन है. तो there are 4 crucial points जो हमने विटनेस किए हैं इंडस्ट्री में. एक ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिमांड. अब पिछले साल अभी जो अप्रैल में ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 40% का डिमांड में इंक्रीज है, तो विच इज अ मैसिव फिगर और पूरी आई थिंक इट इज अनप्रेसिडेंटेड इतनी ज्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. उसके अलावा सीमेंट प्राइस साइड पे we have seen about a 50 rupees increment in the cement bag price in the last 3 months, which is a big which will impact the EPS of the entire industry positively. And then we have interest rates currently at a low because पूरी जो इंडस्ट्री है it is leveraged, highly leveraged. तो उसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट जब 7% पे ड्रॉप हुए 13.25% से,
So that has been a big booster for the EPS and sentiment in the entire market as well. So these are some of the factors from industry के trends देख रहे हैं, which have played a positive role in the overall growth of the sector. So now we move on industry के थोड़े अगर numbers की बात करें, तो I think हमीद साहब जो है industry के numbers पे हमें थोड़ी सी guidance देंगे. Thank you, Ali. Basically, these are the consolidated figures of the industry, and we are presenting about 5 years data, reflecting the overall accumulated figures for the top lines and then the bottom line. Starting from the financial year 2016, the net sales was 226 million rupees, and the bottom line which the industry achieved was around 59 million profitability was only there. So with the increase in the population and increase in the demand and changes in the economic conditions, the demand increases, due to which the top line of the industry is being improved over the period. And if you see the first half year of the 2021, the net sale was around 167 million, and let's hope for the 2021 कोई around 300 billion की जो है वो total over sale होगी, और जो anticipated जो profit होगा वो that would be over 60 to 70 billion. और इसी में if we see the last year's financial year 20, that was not a good year for the industry and as well for the flying cement. I will explain later on you. उसमें financial year 2020 में जो bottom line थी that was reflecting 13 billion net loss for the industry. But now the things are moving on and there are future prospects of increasing in the pricing and the bottom line and the top line of the industry with the growth in the economic conditions as well. The sector profitability, if you see, starting from the financial year 16, there was a bit high side, but from financial year 2020, जो GP ratio, net profit ratio, जो है, I mean the bottom line, that has started moving upward. इसी की वजह से जो stock market में जो है वो इसको anticipate कर रही है, and the prices of the cement sector are increasing. And I'd like to add something over here. तो हमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये एक profitability sector profitability का एक graph यहाँ पे सबको नजर आ रहा होगा. तो अगर हम देखें FY16 was one of the best years for the industry, जहाँ पे आपका gross profit margins जो थे वो 50% को touch कर रहे थे, and जो हमारा operating profit है that was almost touching 45%. So that was one of the best years for the industry. 2020, 19-20 में जो dip आई, that was, as Deep साहब ने बताया, जो overall COVID की situation थी market में, and that negatively impacted the years. But I think we have made a U-shaped recovery now. तो पूरी जो industry है उसने अगर देखें trend, तो एक U-shaped recovery की तरफ हम जा रहे हैं, and the margins are improving drastically. So this will play a crucial role in the overall growth of the sector as well. Next one is the performance at a glance. These are readily available information जो कि हमारी website पे भी होते हैं और financial statements में भी reflect करते हैं. Starting from 2017, if you witness, इसको अगर आप study करेंगे, there was growth potential over the years till 2019 और 2020 जिसका मैंने और अली ने भी explain किया है, due to the economic condition, lockdown condition, 2020 was not good for the company and the sector as well. So the figures were not so good to report, and we have incurred around 530 million net loss for that year. But things are now being changed. Ali ne just explained here. 2021 is going to be a turning point for the flying cement industry as well. 2021, if you have gone through the over 9 months financial statement, 9 month financial statement where we have disclosed the top line of at 2.7 billion rupees, which was almost double of what we have achieved in the last year. And if you see the bottom line, we have reported 131 million rupees against 404 million losses. अगर इसको हम cumulative करें, what we are anticipating in 2021
In 2021, we are forecasting top line of rupees 4 billion against 1.3 billion only in last year. और जो bottom line है वो हम anticipate कर रहे हैं that would be around 205 million. जिसमें 131 million profitability जो है we have already reported. So we have only to achieve 70 million in last quarter of the current year. And in terms of the GP ratio and under financial ratio, the net profit ratio would be 7.42%, current ratio would be 1.27, which would be the highest over the period which I am showing to you. And as far as the debt equity ratio, Ali साहब ने पहले भी explain किया है कि currently जो है that is at the lowest side in the industry, that is 41%. And in next slide I will show you the debt equity ratio जो है that would be further improved over the period. And similarly the EPS will go up in the future. बिल्कुल और जैसे अमित साहब ने बताया तो अगर देखा जाए तो this is a big turnaround for the company and this is जो हमने delta cover किया as we mentioned before in top line 2.7 billion and bottom line में हमने 700 million का delta cover करने का target है हमारा. So this is a big achievement for the company which shows we are moving towards big growth and आगे जो है फिर जैसे अमित साहब ने बताया we'll share some projections with you where we see the future financial performance of the company. So Hamid Saab will share some numbers with us. These are the projections for the next 4 years, including the current year. Starting from 2020, that was not a good year, so I think we should forget the overpast. Let's start the new horizon. जिसमें अली साहब ने पहले भी जिस तरह एक्सप्लेन किया 2021 में there are going to be drastic changes in the form of overproduction capacity. Our line 2 inshallah will be operated very soon, and we have also mentioned this achievement in our letter of right. That was the basically objective to issue the right share deposit. In 2022, we are anticipated that we will achieve the cement dispatches around 1.7 million ton, and resulting we will achieve inshallah gross sale of around 18 billion. So that's going to be a big milestone. You can say it will change everything of the company regarding the financial position, financial reporting, financial results, etc. And inshallah we will close the bottom line at 2.7 billion and resulting in EPS inshallah 7.31%. और इसी की वजह से जो GP ratio, net profit ratio, because of the volume gain, because of the top line improvement, वो भी upward trend में ही होगा and we will achieve GP ratio around 35%, which is almost around what the industry is moving upward. For 2016 में भी around 35% जो था वो GP ratio था. Net profit ratio would be inshallah around 22.48%. जिस तरह अली साहब ने बताया we are technology advancement भी कर रहे हैं हम लोग. WHR is there, then the power turbines are there. उसमें भी जो power cost है वो हमारी drastically reduce होगी, which is always a very big element of around 70 to 70% of total cost of the industry. हमारा focus उसमें ये है कि जो energy जो हमारी cost है वो minimize हो, टेक्नोलॉजी से, हमारी एफिशिएंसी से, हमारी जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है, बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, उससे हम इंशाल्लाह वो उसमें भी इकोनॉमी जो है वो हमारी स्केल होती है. अगर आप हिस्ट्री भी इफ यू विटनेस हिस्ट्री में भी हमारी नॉर्मली जो पावर कास्ट होती है वो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री ऑलवेज लोअर साइड पे होती है. और इसी वजह से दूसरी जो हमारी फाइनेंशियल रेशियोज होंगी इंशाल्लाह दैट विल आल्सो इंप्रूव ईयर टू ईयर बेसिस. करंट रेशियो will 0.8% we will disclose in 2022 and 1.8 in 2022. And the most important, we are discussing again the gearing ratio. Gearing ratio will report at 5.29% in 2024. Because of the over profitability and better working capital management, over that will be drastically reduced, and the sponsors are planning to only work on the equity basis, rather than to dependent on the banks and then have to pay the extra cost and the markup. And I'll add, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा. तो अगर हम 2022 का साल यहाँ पे देखते हैं
जहां पे सीमेंट डिस्पैचेस, अगर मेरा कर्सर आप देखें, 1.7 मिलियन टन पे हमारी एक्सपेक्टेड है अगले साल। इसकी बेसिस मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। सो लाइन 2 जो हमारी 7,700 टन की आ रही है ऑनलाइन, ये हमारी एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो दिस इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। सो दिस विल टेक, जैसे मैंने बताया, डेली कैपेसिटी टू 11,700 टन पर डे ऑफ क्लिंकर, और जो एनुअल कैपेसिटी है वो हमारी रफली 4 मिलियन टन हो जाएगी। तो 2022 में हमने ये दिखाया कि हम 4 मिलियन टन की हमारी टोटल कैपेसिटी अचीव होती है थर्ड क्वार्टर में, और 1.7 मिलियन टन की हमारी डिस्पैचेस होंगी। काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। एंड अगर हम ग्रॉस सेल्स को देखें, वो जैसे मीत साहब ने बताया उसकी कंटिन्यूएशन होगी। वो 2023 में हमने ये शो किया रफली कि ये अबाउट 60% ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे हम चलेंगे। तो वी हैव टेकन वेरी कंजर्वेटिव फिगर्स अगर हम 2023 में देखें, क्योंकि हमारी 4 मिलियन टन की अगर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है, तो वी ओनली शोन अबाउट 60% रफली। जहां पे अगर हम इंडस्ट्री का कंपैरिजन लें, तो आज इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग एट अबाउट 75% ऑपरेटिंग कैपेसिटी। And in the coming years, we see कि ये जो operating capacity industry की है, this will further increase, despite the fact कि नई capacities भी online आ रही हैं। We think कि वो absorb हो जाएंगी easily, because demand साथ साथ compounded annually, I think 7% grow कर रही है। तो ये हमने काफी जो estimates हैं उसकी basis पे बनाए हैं। So 2022 will be a complete turnaround for the company, and जैसे मीत साहब ने दिखाया कि 7.3 रुपीस की earning per share expected है।